हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी इस सब्जेक्ट की हमने जो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, इस एमसीक्यू की सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में हम जिस टॉपिक की एमसीक्यू देखने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 4, स्टोरिंग एंड प्रोटेक्टिंग डेटा एंड माईएसक्यूएल डेटाबेस ओवरव्यू। तो इस टॉपिक के जो है टोटल 25 प्लस एमसीक्यू इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो 4 लेक्चर्स हैं वो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वो आप जरूर देख लें। और ये भी सारे 25 एमसीक्यू हम विद एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इन पीएचपी कुकीज आर सेट बाय यूजिंग डैश डैश। तो इसके ऑप्शन है सेट कुकीज फंक्शन, ऑप्शन बी सेट फंक्शन, ऑप्शन सी कुकी सेट फंक्शन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए set cookies function. This function is used to set the cookies in PHP. Next question है, to remove all global session variables use। तो इसके ऑप्शन है session underscore unset, ऑप्शन बी unset, ऑप्शन सी unset session एंड ऑप्शन डी $sign unset। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए session underscore unset function is used to remove all global session variables. Next question है, to destroy the session we use dash dash। तो इसके ऑप्शन है $sign destroy function, ऑप्शन बी session double underscore destroy function, ऑप्शन सी destroy underscore session एंड ऑप्शन डी session underscore destroy function। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी session underscore destroy। This function is used to destroy the session. Next question है, which one of the following method is used to recuperating prepared statement resources। तो इसके ऑप्शन है end function, ऑप्शन बी finish function, ऑप्शन सी mysqli underscore close function एंड ऑप्शन डी close function। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी mysqli underscore close function। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the every first task executed by a session enabled page is dash dash। इसके ऑप्शन है delete the previous session, ऑप्शन बी start a new session, ऑप्शन सी check whether a valid session exists एंड ऑप्शन डी handle the session। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी check whether a valid session exists। The every first task executed by the session enabled page is check whether the valid session exists। Next question है, how many ways can a session data be stored। तो इसके ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4। There are 4 ways in which session data can be stored। तो ये 4 ways कौन से हैं? Within a flat file, सेकंड है within a volatile memory, थर्ड है using a SQLite database and through user defined function। ये जो है 4 ways हैं to store the session data। next question है, the dash dash directive determine how the session information will be stored। इसके ऑप्शन है save underscore data, ऑप्शन बी session dot save, ऑप्शन सी session dot save underscore data एंड ऑप्शन डी session dot save underscore handler। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी session dot save underscore handler directive determine how the session information will be stored। नेक्स्ट क्वेश्चन है, session allow you to। तो इसके ऑप्शन है store persistent user preference on a site, ऑप्शन बी save user authentication information from page to page, ऑप्शन सी create multipage forms एंड ऑप्शन डी all of the above। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when you want to store a user data in a session use the dash dash array। तो इसके ऑप्शन है $sign underscore session, ऑप्शन बी sys underscore session, ऑप्शन सी $sign session एंड ऑप्शन डी $sign double underscore sessions। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए $sign underscore session। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is the default PHP session name।
तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए PHPSESSID, ऑप्शन बी PHPSESSID, ऑप्शन सी PHPSESSINOID एंड ऑप्शन डी PHPIDSESS। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए PHPSESSID। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन PHP कुकीज आर सेंट बाय यूजिंग डैश। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेट कुकीज फंक्शन, ऑप्शन बी सेट फंक्शन, ऑप्शन सी cookies underscore set function एंड ऑप्शन डी none of them। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए set cookies function। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if session dot use cookies is set to 0, this result is use of this result in नेक्स्ट क्वेश्चन है, if session dot use cookies is set to 0, this result in use of। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेशन, ऑप्शन बी कुकी, ऑप्शन सी यूआरएल रीराइटिंग एंड ऑप्शन डी नथिंग हैपेंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यूआरएल रीराइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस इज सपोर्टेड बाय पीएचपी फ्रॉम बिगिनिंग। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एसक्यूएल, ऑप्शन बी ओरेकल, ऑप्शन सी पोस्टेज एसक्यूएल एंड ऑप्शन डी माई एसक्यूएल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी MySQL. MySQL database is supported by PHP from beginning. Next question है, the hub of a MySQL installation is dash। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए MySQL A, ऑप्शन बी MySQL B, ऑप्शन सी MySQL C एंड ऑप्शन डी MySQL D। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी MySQL D। MySQL D is the hub of MySQL installation। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following statement is used to create a table। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए create table, table name within parenthesis table name column types semicolon, ऑप्शन बी create underscore table name within parenthesis column type and column name semicolon, ऑप्शन सी create table name within parenthesis column name column type semicolon and option D create table table name column type column name semicolon। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए create table table name within parenthesis column name column type semicolon। ये जो है करेक्ट सिंटैक्स है for creating a table in MySQL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following statement instantiate the mysqli class। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए mysqli is equal to new mysqli, ऑप्शन बी $mysqli is equal to new mysqli, ऑप्शन सी $mysqli arrow new dot mysqli एंड ऑप्शन डी mysqli arrow new dot mysqli। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी $mysqli is equal to new mysqli। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which method returns the error code generated from the execution of the last mysql function। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए err ऑप्शन बी err नंबर, ऑप्शन सी एरर एंड ऑप्शन डी एरर नंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ERR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन PHP in order to access MySQL database you will use dash। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए mysql-connect फंक्शन, ऑप्शन बी mysql-connect फंक्शन, ऑप्शन सी mysql_connect फंक्शन एंड ऑप्शन डी SQL_connect फंक्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी mysql_connect function is used to access MySQL database। Next question है, the updated MySQL version released with PHP 5 is typically referred to as a dash। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैपिटल MySQL, ऑप्शन बी स्मॉल MySQL, ऑप्शन सी MySQLi एंड ऑप्शन डी MySQLy। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी MySQLi।
The updated MySQL extension released with PHP 5 is typically referred as mysqli. Next question is, which one of the following statement can be used to select the database? तो इसके ऑप्शन है $, mysqli is equal to select underscore db database name. Option B, mysqli is equal to select underscore db database name. Option C, mysqli arrow sign select underscore db database name. And option D, $, mysqli arrow select db database name. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, $, mysqli arrow select underscore db database name. This is the correct statement to be used to select the database. Next question is, which one of the following method can be used to diagnose and display information about the MySQL connection error? तो इसके ऑप्शन है connect underscore error. Option B, connect underscore error. Option C, mysqli underscore connect underscore error. And option D, mysqli underscore connect underscore error. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, mysqli underscore connect underscore error. This function is used to display information about MySQL connection error. Next question is, if there is no error, then what will be the error method return? तो इसके ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी एम्प्टी स्ट्रिंग एंड ऑप्शन डी 0. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एम्प्टी स्ट्रिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following method is responsible for sending the query to the database? तो इसके ऑप्शन है क्वेरी, ऑप्शन बी send underscore query, ऑप्शन सी send query एंड ऑप्शन डी mysqli query. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, mysqli query. This method is responsible for sending the query to the database. Next question है, which one of the following method is used to retrieve the number of rows affected by an insert, update or delete query? तो इसके ऑप्शन है num underscore rows, ऑप्शन बी affected underscore rows, ऑप्शन सी change underscore rows, ऑप्शन डी mysqli underscore affected underscore rows. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, mysqli underscore affected underscore rows. This method is used to retrieve the number of rows affected by an insert, update or delete query. और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, which method retrieves each row from the prepared statement result and assign the field to the bound result? तो इसके ऑप्शन है get underscore row, ऑप्शन बी fetch underscore row, ऑप्शन सी fetch एंड ऑप्शन डी mysqli underscore fetch underscore row. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, mysqli underscore fetch underscore rows. This method is used to retrieve each row from the prepared statement result and assign the field to the found results. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. आप जो ये चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके. Thank you. Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos.